Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected Federal Minister for Law and Justice, respected Chief Ministers, respected judges, respected members of law and development partners, respected representatives of the provincial governments, respected members of the bar, civil society, respected members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would first like to share with you two anecdotes that have had a profound impact on my understanding of the criminal justice system in general and the prison rights in particular. The first relates to my days in the university when, while attending a course on prisoners' rights, my university professor was explaining the facilities that are provided to more advanced European jurisdictions. Half in jest, I remarked that if such facilities are provided in Pakistan, many might willingly choose prison. The professor paused and said something I have never forgotten. He said, "Punishment is denial of freedom. Beyond that, the prisoner must not suffer." That remark, ladies and gentlemen, speaks directly of the issue that we are to deliberate upon today. Moving on to the next incident, which is not too long ago. After assuming office of the Chief Justice of Pakistan, in one of my visits, I visited the central jail of Dera Ismail Khan. While walking through the barracks, I spoke with a death row inmate who had been convicted to death. And I asked him a few questions which would normally be asked by an inspecting judge. I asked him, "Do you have clean drinking water? Do you have adequate food? Do you have access to health care?" In response, he looked at me and without hesitation said, "Sir, I do not need food, water to drink, or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided." Ladies and gentlemen, that was not an inmate addressing his Chief Justice. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. You can imagine the impact it had on me. You'll be pleased to know, I will give you some positive information also, that when we embarked on this journey to address death appeals, we had cases pending of death appeals filed in 2015. And by the grace of God, we've been able to decide 606 cases, death appeals, till 30th of June 2026. Wait. You'll also be pleased to know that all cases filed prior to 31st of December 2025 have been decided, barring 3 cases which are fixed for Monday and Tuesday. 70 cases were filed after 1st of January 2026 till 30th, out of which 52 cases have been decided. We are left with 19. Very encouraging, but not enough. We have a long journey to go, but there is positive response coming from the courts. Now to why we are all together. Prisons, as we know, are constitutionally a provincial subject. The responsibility for prison administration rests with the
provincial governments. The Constitution mandates that. This conference, therefore, is not for the judiciary setting goals or extending or redefining the limits of prison facilities. What this gathering truly represents is an opportunity for the provincial governments to come together under one roof, by choice and by shared responsibility, to address the challenge that affects not only the prison administration, no, but the functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. This effort, which transcends beyond political divide, deserves earnest commendation. I sincerely thank each one of you. There's no doubt about that. Ladies and gentlemen, over the course of my judicial career, I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, its strengths, its weaknesses, and the remedies required, one must look beyond statistics and just visit a prison. Prisons are the end point of the criminal justice process. They are the culmination of what commenced with the commission of that offense. How did the investigation proceed with the investigation? How did the prosecutors prosecute? How did the judiciary administer justice in coming to the conclusion? They expose the system's broader philosophies, its shortcomings, its abilities or inabilities to balance justice, public safety, and human dignity. As for judicial accountability is concerned, I do not stand here claiming that the criminal justice system is delivering perfectly. I'm not doing that. I'm very clear in that. We have judges duly conducting jail inspections, Criminal Justice Coordination Committee meeting regularly. But yet these mechanisms have not produced the outcome aligning with the urgency of the problem. We must acknowledge this plainly, because reform begins with honesty. But accountability does not rest on one institution alone. Criminal justice system functions in a chain. If one link is missing, the burden shifts to the other, and ultimately it leaves lasting scars on the prison. As institution in charge of the administration of criminal justice, we must all recognize that we are responsible for human lives, lives that matter, and lives that we are answerable for. As Chief Justice of Pakistan, who chairs the Apex Judicial Policy Making Committee, the NJPMC. Ladies and gentlemen, NJPMC is a policy-making body which has all the Chief Justices of Pakistan, of the High Courts, as members, and the chairman is the Chief Justice of Pakistan. That's where we sit down and we contemplate and decide and determine and recommend. It is a recommendatory body where we recommend what policy is to be adopted. Now, when I became the chairman of this committee, two fundamental issues had to be addressed. First, why, despite regular judicial inspections and statutory reporting system which were in place, cases continue to remain pending beyond reasonable period? Why? One. Two, why statutory grievance redressal mechanism within prisons are not functioning effectively, forcing inmates to seek relief from courts? The systems are there. Everything is in place. There was a disconnect. What is that disconnect? Now, it was in this context that we decided that we should have a 3-member committee for each province. 2 parliamentarians,
one from the opposition, one from the treasury, both having served time in prison, and one promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in drafting their recommendations. Well, visits were done, recommendations were filed, they reached the NJPMC. We passed them on to the provincial governments. We said, these are the recommendations. Please, it is up to you how you want to proceed with it. We identified the systemic issues which required to be addressed. I must acknowledge and thank not only the parliamentarians, but also the coordinators of the committee for each province in their time, insight, and commitment devoted to this cause. If I may, I want to name for the province of Balochistan, Ms. Shakir Bibi, Mr. Haroon Bilal Sharif, for the province of Khyber Pakhtunkhwa, Ms. Aisha Bano for the province of Punjab, Ms. Amina Qadir for the province of Sindh, Ms. Haya Iman Zahid. Ladies and gentlemen, this conference, for the first time, has brought all provinces under one roof. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. Ladies and gentlemen, it is very easy for the judiciary to point fingers at the executive, or for the executive to point fingers at the judiciary, or for one provincial government to point fingers at the other. No, we're not to do that. The National Prison Reform Action Plan represents a collective recognition that piecemeal efforts are not enough. What is required is concerted coordination and cohesive commitment. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse, ladies and gentlemen, is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. Ladies and gentlemen, I once again extend my sincere gratitude to each one of you for joining us today. Let us resolve that our criminal justice system remains grounded in human dignity and build a system for future generation to be proud of. Inshallah, Pakistan, Paindabad, thank you. जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाना आइनी और सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गई हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों की जानिब से नुमाइंदगी खुशाइंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। गैरत के नाम पर कत्ल हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं बल्कि माशरे पर एक बदनुमा दाग है। ऐसा अमल सनफी अदम मसावात, पसमानदा और मनफी सोच के आगाज है। कौमी असम्बली ने गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात के खात्मे के लिए करारदाद मंजूर कर दी है। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। मुजरिम और शरीके जुर्म के लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, कानून को हरगिज हाथ में ना लें और औरत के तकद्दुस का एहतराम करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PTV न्यूज़ नेम लस्त बोजनाय कशर पे खबर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफन वोनमुत कि अवामी खदमतुक एजेंडा गछि मजीद तेजी सान ब्रोह कुन बढ़ावन युन तवामी मसाइल गछन अवलिन तरजीहातन मज अंजरावन yin इस्लामाबाद मज कशीर तो गिलगित बिस्तान के मामलों मुतलिक वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम सत कत करान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफन वोनमुत कि आज़ाद जम्मू कश्मीर तो गिलगित बिल्तिस्तान तरक्की खुशहाली तो अवामी फला बापत गछन तमाम वसाइल बरोई करान yin मुलाकात समझाओ मुल्क मजमूई सूरत हालस पे तबादुल ख्याल दफ्तर खारिज तर्जुमान वोनमुत कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करन पगह पे 5 जुलाई तम ईरान तो तुर्की सरकारी दौरे वज़ीर आज़म करन ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर सईद अली खamenei सज तदफिन पत तुर्की के सदर रजब तायिब एर्दोगान सज दावत पे तुर्की दौरे दौरस दौरान यह दशवें मुल्कन दरमियान दो तरफा ताल्लुकातन पे तबादुल ख्याल कर दफ्तर खारिज तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबियन हफ्तवार न्यूज़ ब्रीफिंग दिवान वोनमुत कि पाकिस्तान भारत की तरफ सिंतास माहिदे यक तरफी मुतली मुस्तरद करान वाज़ह कोर्मुत कि पन आबी हकूकन हिंद तहफ़ुज़ खतर यन प्रेत मुमकिन इकदाम बरोई करान पाकिस्तान सूरत हालस पे नजर थवित आबक मामले इलाकाई अमन तो सलामती से जुड़ित ईरान अमेरिका मुज़ाकरातन पे बात करान तमो वोनमुत कि पाकिस्तान रोज़ कतर सत रलित मिलित खत्स मज अमन इस्तेकाम यकीनी बनाने खतर किरदार अदा करान एक सवाल जवाब दिवान तर्जुमान वोनमुत कि पाकिस्तान 753 पाकिस्तानी कैदियन फहरिस्त भारत हवाल कोर्मुत तर्जुमान सद मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान कैदियन जल्द रिहाई तो वतन वापसी खतर मुसलसल इकदाम करान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सपद आज़ाद जम्मू कश्मीर मज इन वाल नाम इंतखाबात हंदिस सिलसिलस मज मुशावरती इजलास मुनक़द यथ मज PML नून के अहदेदारों तो कारकुनों नासिर हुसैन डारस LA 34 जम्मू 1 तो आमिर शाह वैली 2 पे मुस्लिम लीग नून पार्टी टिकट मिलनस पे मुबारकबाद पेश कोर आज़ाद पुलिसन मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद दौर कोर्मुत तो ताजरन तो शहर हंदिस अथवास पे तिहुंद शुक्रिया अदा कोर्मुत अत मौके पे ताजर बरादरी IG सद दौर खैर मकदम कोर्मुत मुजफ्फराबाद के शहरियों कलादम एक्शन कमेटी हंद तरफ हड़ताल काल मुस्तरद कर कारोबारी सरगर्मी जारी थम IG पुलिसन ताजरन सत कारोबारी सरगर्मियन तो मजमूई सूरत हालस पे तबादुल ख्याल कोर्मुत तमो वोनमुत कि तमाम मुहब वतन कशर पाकिस्तान सत मोहब्बत करान तो पाकिस्तान सत मोहब्बत करान आज़ाद जम्मू कश्मीर हिंद गोर अवामन कोर कुन किस्मुक इंतशारी जथ कोर तमो मुस्तरद शहरियों इंतशार पसंद राशन हंद मजमूम एजेंडा यकसर मुस्तरद करमित मकबूज जम्मू कश्मीर राजौरी जिलस में ऑपरेशन शेरो वाली हिंद नाव से जारी बड़िस पैमानस पर तलाशी तो मुहसर पुरतशद कार्रवाई 41 दह जारी रोजम कमिस मुताबिक भारतीय फौजी पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एलिट कमांडोज तो पुलिस मुगलान तो मंजाकोट इलाकन जंगली इलाकन मज वसी तलाशी करान भारतीय फौजन इलाकस मज कुदरती गारन हज तलाशी कर्म ताहम तिमन वनुक ताम कह हासिल सपदमुत भारतीय फौज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल इने राजा सुब्रमण्यन तोर याव राजौरी तो पुंछ दौर तो ऑपरेशन मज शदत अनच हिदायत करमित यह इलाक मुकम्मल तौर भारतीय फौज किस गैरस मज तो ये मीडिया सहित दिन ये जन मुकमिन अपने घर घर अंदर प्रिसगर कर कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस वोनमुत कि काबिल इंतजामियन हुरियत रहमान सान असबद कशर गारकोनी तौर जेलन मज नजरबंद करमित कश्मीर मीडिया मुताबिक हुरियत कॉन्फ्रेंस तर्जुमान एडवोकेट अब्दुलरशीद मिनहासन श्रीनगर पे जारी अकिस बयानस मज वोनमुत कि हुरियत रहनमा नौजवान तो कारकुन सान 300 खुद ज्यादा कशर भारत तो मकबूज जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ जेल मज नजरबंद तमो वोनमुत कि भारत बदनामी जमाना तहकीकती इदारन कशर सियासी इंतकाम निशान बनाने खतर इस्तेमाल करान तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा तो दोयमन आलमी इदारन पे जोर दितमुत कि कशर नजरबंद नीज रिहाई तो मस नजरान बापत त्रविन तम भारत पे दबाव डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ममताज कशर ताजर तो तहरीक आज़ादी हंद सरगर्म हिमायती डॉक्टर मुबीन अहमद शाह सज जायदाद जब्ती शदीद मजम्मत कर्म कमिस मुताबिक DFP तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल श्रीनगर पर जारी अकिस बयानस वोनमुत कि मुबीन अहमद शाह अख बावकार कारोबारी शख्सियत तो तम कशर हक खुदरायत हिमायत में सठा काल पे आवाज बुलंद करान तर्जुमान वोनमुत कि भारत हेक जबर उस्ताद कार्रवाई सहित कशर हक खुदरायत के मुतालबे नश हरगिज तो दस्तबरदार कर भारतीय JNZ तहरीक आक्रोश जनता पार्टी मज तेजी आमद मोदी हुकूमत उल्टी गिनती शुरू सपज भारतीय नशरियाती इदार मुताबिक मोदी सजो नाकस माशी पॉलिसियों सब भारतीय नौजवान हज उम्मीद फुटरावित मुल्क बगावतस कुन धक्योमुत मोदी सदिस जुल्मस खिलाफ शुरू सपद नौजवान तहरीक नाकामी शिकस्त जंग बनियोमुत शदीद गर्मी बावजूद भूख हड़ताल कर वाली आक्रोश जनता पार्टी जिदन मोदी सुन पोल खोलमुत कौशिक सब्ज खबर खत्म अल्लाह।
हर वक्त बर वक्त। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। PTV न्यूज़ दी गोजरी खबरां के नाल मोहम्मद निसार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि अवामी खिदमत को एजेंडो होर तेज़ी न लगे बधायो जाए ते अवामी मिसाइल का हल ना अवलीन तरजीह दी जाए। इस्लामाबाद में अमूर कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर अमीर मुकाम से गल करता हुआ वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की खुशहाली ते अवाम फलाह वास्ते तमाम मिसाइल बरोए कार लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ते वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हो। तर्जुमान दफ्तरी खारजा ने कुछ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बल्कि 3-5 जुलाई तक ईरान ते तुर्किया को सरकारी दौरों करेंगा। वज़ीर आज़म ईरान का साबिक सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई की तदफीन के बाद तुर्किया का सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की दावत पर तुर्किया को दौरों करेंगा। दौरा के दौरान दो मुल्कों बशकार दो बकी तलक़ात व तबादला ख्याल किया जाएगा। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग देता हुआ तर्जुमान दफ्तरी खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी को कहना पाकिस्तान बारदारों सिंध ताज मादा की एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद करता हुआ का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते हर मुमकिन इक़दाम रोए खातर लिया जाएगा। पाकिस्तान सूरत हाल पर डूंगी नज़र रखे हुए है, पानी को मामलों इलाकाई अमन सलामती नाल जुड़ी हुए है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर डिवीजन का सरबंद हेड जम्मू कश्मीर में होने वाला आम इंतखाबात के सिलसिला में मशावरती इकट्ठ हो। इकट्ठ में अहदेदारां ते कारकुनां ने नासिर हुसैन डार ना LA 34 जम्मू 1 ते आमद शाह साहब ना वैली 2 दी मुस्लिम लीग नून को पार्टी टिकट मिलन वार मुबारकबाद पेश की। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद को दौरा किया ते ताजरात शहरियों का तावन बार शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर ताज बरादरी ने IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का दौरा को खैर मकदम किया। मुजफ्फराबाद का शहरी ने कल अदम एक्शन कमेटी की हड़ताल ना मुस्तरद करता हुआ कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखीं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने ताजर दी कारोबारी सरगर्मियाँ ते मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर माफिक मदीना मार्केट सने पूरा शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल ते शहरियों की आमदोरफ्त जारी है। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर को कहना तो आज़ाद कश्मीर का शहरिया ने कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रख के इंतशार पसंद अनासर का मज़मूम एजेंडा ना यकसर मुस्तरद कर देते हुए नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर का ज़िला राजौरी में ऑपरेशन शरोवाली का नाम दी जारी बड़ो पैमाने पर तलाशी ते मुआसरा की पुरतशद्दद कार्रवाई 41वें रोज़ भी जारी रही। KMS माफिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एलिट कमांडोज ते पुलिस मुगलान ते मंजाकोट का इलाका में जंगलाती इलाका में वसी तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय फौजियों ने इलाका में मौजूद कुदरती कारां की तलाशी ली पर हुण तक कोई शय नहीं मिली। भारतीय फौज का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने भी राजौरी ते पूंछ को दौरा किया ऑपरेशन में शिद्दत लान की हिदायत दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने क्यों काबज़ इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमा सने हज़ारा कश्मीरियां ना गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद कर रखे हुए है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनाज ने श्रीनगर में जारी कर बयान में कहा, हुर्रियत रहनुमा नौजवाना ते कारकुना सने 3000 ते बाद कश्मीरी भारत ते मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा, बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारा ना कश्मीरियों ने सियासी इंतकाम को निशाना बनाने वास्ते बड़ा पैमाना पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा ते दूजा आलमी इदारा पर जोर दिता जो नज़रबंदा की रिहाई ते मसला कश्मीर का हल वास्ते भारत पर दबाव करें। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मुमताज़ कश्मीरी ताजर तहरीक आज़ादी का सरगर्म हमायती डॉक्टर मुबीन अहमद शाह की जायदाद की जब्ती की डाली मजम्मत की है। DFP का तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में जारी कर बयान में कहा, मुबीन